Morning student, I'm your teacher Meena. Today I will teach your geography 5th chapter. The chapter's name is Natural Vegetations and Wildlife. Okay student, आप इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, आपको इसी वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ. आपको हम पहले रीड करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस मेनली फाइंड इन आवर कंट्री एंड वी ऑल्सो डिस्कस द ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सब टॉपिक्स. ठीक है, आपका क्वेश्चन ओनली है डिफाइन द ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाइंड इन आवर कंट्री एंड यू शुड मेक अ मैप ऑन दिस question. Okay, let me start it. The following major types of vegetation mainly identify our country. So we find in our country what type of forests is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and shrubs, and the mountain forests and mangrove forests. Okay students, आपने ये जो vegetations का important chapter का part है ये आपने 7th class में भी किया था. 7th क्लास में ये एक शॉर्ट नोट में था, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन में है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, जस्ट लाइक दिस. Seasons, dry seasons, so all they look like a green, they not shed their leaf at a particular time. Okay, let me start it. These forests are restricted to heavy rainfall. The main important point is they have rainfall in heavy way. Western Ghats, they only find on Western Ghat and island groups of Lakshadweep, Andaman and the Nicobar, upper part of Assam, Tamil Nadu. Okay, they are the place where they find. They are the best in areas having rainfall more than 200 centimeter because they also depend on the rainfall, so they need more rainfall. With a short dry season, the trees each great height. How many height is 60 meter to even above also. Since the region warm and wet through the year, it has luxuriant vegetations, alpine trees, shrubs and creepers. Given the multi-yard structures, these are not definite time to tree the shades their leaves. As such, they look like always in a green year. Okay, so बच्चों ये evergreen क्यों दिखते हैं? Because they have not proper seasons, dry seasons, so they always not a particular time shed their leaves, and always they depend on the heavy rainfall, or they only may also found on the Western Ghats and islands of the area. Okay, and now the height of these trees are above the 60 meters. You should to make this map. Okay, and learn also where they found in where the region in our country. Some commercially they also important for the commercial use. These forests are ebony, mahogany, rosewood and rubber and cinchona. They are used for the commercially. The common animal we found here is monkey, langur, lemur, deer. Okay, one-horned rhinoceros are found in the jungles as Assam, West Bengal. Besides these animals, plenty of birds. We find here the plenty. These are the most widespread forests in India. They also call the monsoon forest because they depend on the monsoon season. They all depend on the dry season. Spread over the region receiving the rainfall between the 200 centimeter to 70 meter. Okay student, एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितना रेनफॉल चाहिए था 200 मीटर से, और इसमें 200 मीटर टू 70 मीटर. ओके, एवरेज रेनफॉल नीडेड. ट्रीज आर फॉरेस्ट टाइप ऑफ शेड देयर लीव्स एंड बट 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई सीजन. सो स्टूडेंट्स ये अपने लीव्स को शेड करते हैं एक ड्राई सीजन में, सो दे लिक्विड deciduous forests. On this basis of availability of water, this forest further divided the moist and dry deciduous. The division of deciduous forest is moist and dry deciduous. The former found in area receiving rainfall 100 to 100. These forests exist mostly in the western part of the country. कहाँ find करते हैं mainly student? Western part such as in Himalayas, western Odisha, Chhattisgarh. You should to learn these states according to on forests. Teak moss dominate pieces of this forests. Bamboo, saal, shisham, sandalwood, kasam and arjun, mulberry and other the commercial important for the spice species. Okay student, commercially भी यूज़ important है. एवरेज रेनफॉल चाहिए, ड्राई सीजन पे डिपेंड होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी शेड्स अपने लीव्स को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जिससे वो कैसे लुक लाइक डिसिशियस फॉरेस्ट के लुक में हमें दिखाई देते हैं. ओके
The dry deciduous forests are found in the area having rainfall 100 centimeter to 7 centimeter. Okay. The plants of this is sal, peak and neem. After that, the animals find in here animals, tigers, big deer. Okay. They also find of the many kinds of reptiles such as lizard. Small plants. Okay. Thorny plants which has the thorns. They mainly find in the dry areas such as Rajasthan. Let me start it. The reason of this less than 70-meter rainfall. They need only 70-meter rainfall. The natural vegetation consists of thorny trees. जैसे कि मैंने बताया था यहाँ ये मेनली थ्रोनी ट्रीज अवेलेबल होती है, बुशेस होती हैं. वेजिटेशन फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द गुजरात, राजस्थान. मेनली 70% स्टूडेंट ये राजस्थान में ही पाए जाते हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. ओके. इसमें कौन कौन से आते हैं? पाम्स. इसमें कौन कौन से प्लांट से प्लॉटेड हैं? कैक्टस है, इसमें प्लाम्स हैं. प्लाम्स के पेड़ डीज आर द सेक्रेटेड फ्रॉम द हाई लूम रूट्स पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर. ओके स्टूडेंट, अभी थ्रोनी है. थ्रोनी क्यों रीज़न है? क्योंकि यहाँ ड्राई सीजन में इनको वाटर की नीड होती है, तो इनकी रूट्स क्या होती है? नीचे तक सर्वाइव करती है ताकि वो इजीली वाटर को कैप्चर कर सके. और अपने लीफ पर भी ये थ्रोन्स बना के रखते हैं ताकि वहाँ ट्रांसमिशन न हो और वाटर का कंजर्वेशन हो. वो अब कैक्टस है. कैक्टस दिखने में मोटा होता है, इसकी थिकी स्टेम होती है और प्लस थोन होते हैं, तो दे हेल्प टू कंजर्व योर own water. Okay student, let in the forest we only found in the rats, mink, rabbit, fox, wolf, tiger. They are the animals of this type of vegetation. Okay, now we discuss about the mountain forests. The word describe itself. Mountain forest it mainly find in high latitude areas, mainly in hilly areas. They only form is conical shape. Okay, the mountain areas decrease in the temperature, increase in latitude. जैसे हम mountain areas की तरफ move करते हैं, temperature low होता है और latitude increase होता है. Change in the nature of vegetation. Okay, so there is succession of types of forests are found in the height. They only find in the 1,000 to 1,000 meters. Evergreen broadleaf sticks such as oak, chestnuts predominates between the 1,500 to 3,000 मीटर. टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग द कॉनिफेरस. जैसे मैंने बताया था बच्चे, मेनली यहाँ पे कॉनिफेरस प्लांट्स मिलते हैं. पाइन, डेकोरेट, सिल्वर फर एंड देके फाउंड दिस फॉरेस्ट मोस्टली साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. ओके स्टूडेंट, इनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिली एरियाज में मिलता है, हाई लैटिट्यूड मिलता है, हाई लैटिट्यूड बिटवीन अराउंड 1,000 to 300 meters. They also find the conical ferous plants. Okay, they mainly found out the Himalayas region. At higher elevation of temperate grassland common at high altitude generally more than 3,600 meters above the sea level. Temperate forests are the grassland given way to alpine. Okay student, जैसे ही latitude टेम्परेचर डाउन होता है, लैटिट्यूड इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे ट्रीज़ और शर्ब्स ना मिलके वहाँ अल्पाइन वेजिटेशन जस्ट लाइक ए ग्रास लैंड अवेलेबल होती है. ठीक है. सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स and bitters and common trees. These forests, however, yet progressively stunned by they approach the snow line. Ultimately, the shrubs or curves may into the alpine grassland. These are used extensively for the grazing of the nomadic tribes like the Gujjars and Bakrawalas. Okay student, जैसे height increase होती है, temperature low होता है, तो vegetation change in the grassland और this grassland mainly used for the grazing of the mainly tribes. वहाँ जो जनजाति है वहाँ अपने जानवरों को खिलाने के लिए घास मिलता है, जिसमें कौन सी ट्राइब्स आती है? गुज्जर्स एंड Bakrawals. At height altitude motions and leeches form the part of the under vegetations. The common animals found in this forest, Kashmir stag. तो कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे? Kashmir stag, topper deer, wild jackal, rabbit, gibbon. Okay, you should to learn all this main important points of the chapter. Now main important forest is mangrove forest. The name of mangrove come from the mangrove trees. They trees mainly find in the Sundarban Delta. Okay, just like this picture, they call me mangrove tree. The tree is lie on roots on the and on the under the water and some roots under the soil. Okay,
The mangrove tidal forests are found in the areas of coastal influenced by the tides. They mainly influenced by the tides. What do you mean by the tides, students? The rhythmic changes between water of high and low rain. The rhythmic changes on a stream of oceans in a day 2 times. Okay, mud and slit get acclimated such a coast. Dense mangrove one commonly varieties of roots of plants submarine in water. So main important of mangrove one is that their roots are submerged into water, or they highly affected the tides. Tides are the rhythmic change in of water twice in a day. The Krishna and the Godavari and Kaveri are the covered by such vegetation in the Ganga Brahmaputra delta. Sundavan trees are found such provide the durable hard timber, palm, coconut, agar, etc. are the grow in the some parts of the delta. We also find here the Royal Bengal tiger, famous animal in this forest, turtle, crocodile, and the स्नैक्स आल्सो फाइंड इन दिस फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, मेन पॉइंट्स को अपनी बुक्स में लिखना है. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है मैंने, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, मेक ए मैप ऑन दिस चैप्टर. ओके.